So today we are going to discuss about SD-WAN controller deployment. And then we will see how to deploy WAN edge routers. Okay. Now I told you that if you want to deploy SD-WAN solution, you have to start with controller deployment, right? After controller deployment, you can deploy your WAN edge routers. Okay. So here we have different methods. Like I told you previously, first of all, you can use Cisco hosted cloud. आपका use कर सकते हो Cisco hosted cloud. After that, you can use public cloud. And then you can also use on-prem deployment, on-premises deployment. Okay, in Cisco hosted cloud, all the things will be managed and taken care by Cisco, like the installation of controllers, their backup and disaster recovery. All the things will be maintained by Cisco. In public cloud, all these operations will be maintained by MSP, managed service provider, or customer itself, like controller installation, their backup, recovery, okay, everything. After that, on-prem deployment, it will be managed by customer itself, right? In on-prem deployment, you are going to use private cloud to deploy all the controllers in network. Like here in our lab, we are using private cloud deployment, okay? So in our topology, we have a vManage. We can use these shapes also. But it is not that much flexible to use, okay? तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं. So here we have a vManage. Then we have vBond. These are controllers, right? After that, we have vSmart. And here we are connecting iOS CA, iOS Certificate Authority. And these devices are connected with a switch, which is called here in our topology, it is called DC switch. Now, I told you to deploy the controllers, you have to do some initial configuration first of all, like system configuration, right? After that, you need to do VPN configuration. After that, you need to configure routing so that your controllers can be reachable to the network. They can send the traffic to different networks also, right? Okay, this is how we are connecting the devices. So for this switch, what I told you, all these four interfaces will be the part of same VLAN, right? Here we are running a network 223.1.1.0/24, okay? So this vManage is .10, vBond.11, vSmart.12, and it is .13, okay? On this switch, we are creating an interface VLAN and we are defining this IP address 223.110. So all these controllers will be able to reach each other and the certificate authority also, right? So हमने यही सब किया था last class में. Let's go to the lab and do it again. Today I am using the updated operating system for vManager vBond. Okay, we are using 20.3.1 now. This is iOS CA DC switch. So on this switch, you can check the configuration. Right now, devices are booting. Here username is admin and password is admin. So here you can see it is showing system initializing. Please wait to login, right? जब आपका vManage vBond start होगा उसके बाद उनकी सारी process initialize होती हैं. So you have to wait for that time. So DC switch, here you can see it is started. You can check its configuration. Like here we have a VLAN 100, okay? And we are going to assign these four interfaces in VLAN 100. Interface VLAN 100, sorry, interface range gig 0/0 dash gig 0/2 and 3 are there. Gig 0/2 dash 3, comma, gig 1/0 dash 1. Yes. Switch port host, switch port access, VLAN 100. So okay, switch पे कुछ ज्यादा ही configuration है. चलो कोई नहीं. Here on VLAN 100, you can see we have 223.1.1.
Okay, see this gig 0 by 0 is connected with the internet. Okay, and gig 0 by 1 is connected with MPLS router. So these interfaces are also connected as layer 3 interfaces on the switch. Okay, ठीक है, ये gig 0 by 1 and gig 0 by 0. So from here you will be able to ping the controllers once they are configured. तो अभी ready नहीं दिखा रहा है, just wait. It is initializing. Okay, so the devices are starting, just wait. iOS CA is started. We will configure this router as a certificate authority like we did in previous class. Okay. So here you can give host name iOS CA. Interface E0. Okay, it is gig 0 by 0. No shutdown. And you can configure IP address 223.11.13. Okay, and then subnet mask. Then I will configure a default route towards DC switch. Okay, now you can verify the reachability with DC switch. It is reachable. Now let's configure this router as iOS CA. So first of all, I will generate a key pair, crypto RSA key pair, crypto key generate RSA. Label it is iOS CA. Modulus 1024. This is the RSA key pair. या 2048 देंगे key size. Okay. तो ये RSA की जनरेट करेगा. अब आप PKI सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हो. क्रिप्टो PKI सर्वर. दिस इज फॉर सर्टिफिकेट अथॉरिटी. नेम इज iOS CA. देखो आपको ये याद रखना है, जो आप की पेयर का नेम दोगे वही आपको iOS CA का नेम देना है. ठीक है, ये आपका सर्टिफिकेट अथॉरिटी है PKI सर्वर. तो PKI सर्वर का नाम क्या दोगे, जो आपने ऊपर RSA की का नाम दिया है. ठीक है, iOS CA. So that this PKI server should be able to use this RSA key pair. Okay. Then you will define issuer name cn equal to iOS CA dot lab dot local. और यहाँ पे जो भी आपका कंप्यूटर नेम हो वो डिफाइन करते हैं. ग्रांट ऑटो. Certificate will be granted automatically. Database level complete. Means all the assigned certificates, all the granted certificates will be saved in the database. Database URL flash. कहाँ पे सेव होंगे? Flash में. Okay. Then to secure the certificate, we are using hash SHA-256. After that, database archive PEM password CCIE1234 for example. Okay. फिर आप नो शट डाउन कर दो सर. Then you will enable IP HTTP server. Okay. After that, IP HTTP authentication local. See, when you enable HTTP, the certificate server will be enabled. Okay. Then username admin, privilege 15, password Cisco. Then IP HTTP path flash. So if any other device will try to download the certificate from this iOS CA, it will be provided through the flash, provided from the flash. So you need to export your root certificate. See, this is your root certificate. Do show crypto PKI certificate. This is your root certificate. You need to export this root certificate in the flash. अगर आप देखोगे अभी do dir flash, तो यहाँ पे देखो अभी कोई CA की फाइल नहीं है, राइट? कोई यहाँ पे CA की फाइल नहीं है. ये तीनों है, बट ये सर्टिफिकेट्स नहीं है, राइट? So you can export the certificate. You can export the root certificate. Crypto PK export iOS CA PEM URL yeah flash. ये फाइल नेम है, डेस्टिनेशन फाइल नेम iosca.ca. अगर आप फिर से चेक करो फ्लैश को तो देखो ये फाइल आ गई iosca.ca. So this is your root certificate. Clear? So this CA is configured successfully. Okay. Now vManage is also ready. So you can log in, username admin, password admin. Now here you can see we are in system configuration. So running config system. You can see there is no system configuration for now. तो अब अगर आप कुछ कॉन्फ़िगर करना चाहते हो आप कहाँ जाओगे? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, राइट? एंड हियर यू विल डू सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन. Like here you will define the host name vmanage or vmanager like this. You will define site ID. So for vmanager for this HQ data center, we are using site ID 100. Okay.
system IP. System IP will be configured from this subnet 10.100.0/24. तो यहाँ पे आप देख सकते हो system IP 10.100.0.10. Then you need to define vBond address 223.1111 and organization name. Here I am giving this organization name. Exit. तो देखो ये हमने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए थे सबसे पहले, फिर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर दी, राइट? बट दिस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट अप्लाइड. ओके, जब आप इसको कमिट कर दोगे तब ये अप्लाई हो. नाउ इट इज अप्लाइड. ओके, लेट्स कॉन्फ़िगर VPN 0. I told you the interface which is connecting to the WAN transport will be the part of VPN 0, right? VPNs are used to create different segments in SD-WAN overlay network. So the segment or the interface which is providing the connectivity to the WAN transport, it will be the part of VPN 0. So here interface, it is ETH 0. No shutdown, IP address. Wait, here we have 223.11/10/24. Then tunnel interface, allow service all. Because I told you when the controllers will join SD-WAN overlay network successfully, they will create control connections or DTLS tunnel between them. So the interfaces of the controller which are connected with DC switch, they are tunnel interfaces. Okay, जो controllers के interfaces इस DC switch से connected है, they are all tunnel interfaces. Okay. After this, you will configure a default route towards DC switch 000/0, then 223.111. कमिट एंड क्विट. अब देखो अगर आप इसको कमिट नहीं करते हो और एग्जिट करो यहाँ से, फिर एक कमांड चलाओ शो कॉन्फ़िगरेशन. इट विल शो यू द कॉन्फ़िगरेशन दैट रिक्वायर्स कमिट, जिसके लिए आपको कमिट की जरूरत है. ठीक है, तो कमिट कर दो. अब ये कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई हो गई. अब फिर से चलाओ शो कॉन्फ़िगरेशन. अब नहीं दिखा रहा कुछ भी, है ना, बिकॉज देयर आर नो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस व्हिच आर नॉट कमिटेड. ओके, सब कुछ कमिट कर चुके हैं हम लोग. ठीक है, तो यहाँ से चेक कर लो आप शो रनिंग कॉन्फ़िग सिस्टम. तो ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हो गई कंट्रोलर पे. फिर शो रनिंग कॉन्फ़िग VPN. तो देखो हमने अभी VPN 0 कॉन्फ़िगर किया. We have defined Ethernet 0 configuration which is connected with DC switch. We configured the default route towards DC switch, but we have not configured this management interface which is connected with this management cloud, right? This Ethernet one. It will be the part of VPN 512 which is used for management traffic, right? तो आप कहाँ पे जाओगे? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाओ. यहाँ से क्या कॉन्फ़िगर करना है? VPN 512 इंटरफेस ETH 1. नो शटडाउन, IP एड्रेस. Here I can give 10.1.10/24 और इसको क्लोज कर दो. कमिट एंड क्विट. कमिट एंड क्विट करोगे तो आप किसी भी मोड पे हो, डायरेक्ट आप कहाँ जाओगे? प्रिविलेज मोड पे, है ना. कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगी, कमिट हो जाएगी और आप सीधे कहाँ जाओगे? प्रिविलेज मोड. बार बार एग्जिट नहीं करना पड़ेगा. ओके, तो आप चला लो शो रन. क्या मेरे को आईपी DHCP के थ्रू देखना तो IP DHCP क्लाइंट एक कमांड होती है. देखो इंटरफेस पे चले जाओ, VPN 512 में चले जाओ फॉर एग्जांपल, और इंटरफेस ETH 1 है. यहाँ पे कमांड चला दो IP DHCP क्लाइंट, बस. ओके, ठीक है. अब देखो यहाँ पे हमें सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने पड़ेंगे, राइट? Because whenever any SD-WAN component will try to join SD-WAN overlay network, it needs to be authenticated using digital certificates. Okay, so on these controllers and WAN edge devices, a root certificate is installed by default. Okay, which can be used when we are using Cisco PKI or automated certificate authentication. But if you are using enterprise certificate authority to perform, or you can say to generate the certificate, to distribute the certificate, then we have to uninstall this default root certificate. Okay, क्योंकि हमें फिर enterprise root certificate authority से certificate डाउनलोड करना पड़ेगा. ये वाला तो आप यूज नहीं कर सकते जो यहाँ पे डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड है, राइट? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? डिफॉल्ट सर्टिफिकेट को यहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे. रिक्वेस्ट रूट चेन अनइंस्टॉल. एंड नाउ वी विल डाउनलोड द न्यू रूट सर्टिफिकेट फ्रॉम एंटरप्राइज CA. ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या कमांड चलानी है? यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, CA से डायरेक्ट एक फाइल को डाउनलोड कर लेंगे. रिक्वेस्ट डाउनलोड HTTP username admin, password Cisco @223.1113, and the file name is iosca.ca. Right? We can download this file from certificate authority to to vManage database. Right? It is downloaded and it is saved in /home/admin directory. Okay. Now we will install it. Request root search chain install home admin iosca.ca. ये डायरेक्टरी होती है जिसमें आपकी फाइल ये सेव्ड है. ठीक है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लो. ये root certificate install हो जाएगा. Now you can see it is installed, right? After this you can check show control local properties, and here it will show you that root certificate is installed,
But if I talk about the device certificate or identity certificate, they are not installed. Okay. रूट सर्टिफिकेट इंस्टॉल. अब हम लोग क्या करेंगे, वी मैनेज के GUI पे जाएंगे. यू कैन चेक VPN 5.2 कॉन्फ़िगरेशन. ओके, तो आप अपने ये मैनेजमेंट नेटवर्क से ये 10.1.10 नेटवर्क को वेरीफाई करके देख सकते हो. पिंग 10.1.10, it is reachable, so we can take the GUI access of vManage, right? HTTPS 10.1.10. Click on advanced and proceed to this website. तो ये vManage का लॉगिन पेज है, right? Here you need to put the username and password. यहाँ पे पासवर्ड डाल दो, पासवर्ड भी एडमिन है. ओके, तो ये पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहा है. So this is the GUI. Okay. सर मेरा एक डाउट था, मेरे को ना कई बार ये क्या नाम है जो एक्सेस करने में प्रॉब्लम आता है. उसको अर्जेंट में चाहिए डिटेल्स, वो पेट्रोल वाला. गिव मी 1 मिनट. ओके, बस करो. हेलो, हाँ सर जी, क्या कह रहे थे आप? सर मैं जीओ एक्सेस करता हूँ ना तो पेज तो हो जाता है सिस्टम पे, बट जीओ कभी कभार खुलता है, कभी नहीं खुलता है. आप अपने सिस्टम पे चलाते हो लैब? हाँ मैं सिस्टम पे चलाता हूँ. रैम कितनी दी है आपने vManage को? मैंने रैम 16 GB दिया है सर. 16 GB तो चल जाना चाहिए यार, वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए. तो रैम और बढ़ाऊंगा सर. मैंने एक्चुअली वीएम के मैंने 64 GB दे रखी है. अच्छा, तो आपका मतलब कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो आप vManage का? 19.5. तो चल जाना चाहिए यार वैसे तो, क्योंकि 19 के बाद 24 GB रैम देनी पड़ती है वैसे हमें vManage पे. बढ़ाना एक बार vManage पे रैम, ठीक है? फिर देखो शायद वर्क करने लगे. वैसे ऐसी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए पहली बात तो, है ना? अगर पिंग हो रहा है तो आपको GUI मिल जाएगा. जैसे देखो मेरा आ गया इसलिए, है ना? तो सर क्या नाम है 20 वर्जन के लिए कितनी रैम चाहिए? 24 GB vManage पे. 24. हाँ, ओके. तो ये देखो GUI, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे 3 लाइंस पे तो आपको एक और डैशबोर्ड, सॉरी टैब्स ओपन हो जाएंगी, जिन पे आप कॉन्फ़िगरेशन, ट्रबल शूटिंग, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें कर सकते हो. ठीक है. तो अब देखो हमें क्या करना है. सबसे पहले जब आप फर्स्ट टाइम GUI लेते हो vManage का, आप एडमिनिस्ट्रेशन टैब में जाओगे and then you will go to settings, and here you will define organization name, vBond address, right? You will define controller certificate authorization, right? तो सबसे पहले organization name दे दो. ये जाएगा SD-WAN, here you are SD-WAN lab 01. Okay, save. After that you can give, इसको disable करना पड़ेगा. After that you can give vBond address 223.11, and then you can change this controller certificate authorization. Here it is set to Cisco automated, right? You can use Symantec automated, you can use manual, otherwise you can use enterprise root certificate. Now you need to paste the text of root certificate here, right? आपको यहाँ पे root certificate paste करना पड़ेगा. अगर आपने as a file download किया तो फाइल को अपलोड करके यहाँ से import and save कर दो, right? बट अभी के लिए हमें क्या करना है, copy and paste. Go to iOS CA, crypto PKI export. Sorry, you need to go to global configuration mode. Crypto PKI export iOS CA and terminal. तो ये आ गया रूट सर्टिफिकेट, इसको कॉपी कर लो एंड गो टू vManage एंड पेस्ट इट हियर. देन क्लिक ऑन सेट CSR प्रॉपर्टीज, ये भी आप डिफाइन कर सकते हो. तो ये हो जाएगा आपका डोमेन नेम lab.local, ऑर्गेनाइजेशन SD-WAN lab 01, सिटी नोएडा, स्टेट, ईमेल, कंट्री, एंड वैलिडिटी पीरियड यू कैन मेक इट अप टू 3 years, राइट? तो अभी के लिए 2 रहने देते हैं. इंपोर्ट एंड सेव. ओके. So here we have changed it to enterprise root certificate. Okay. Now we have installed root certificate on vManage successfully, right? We need to generate CSR from vManage, and we need to send the CSR to iOS CA, so that iOS CA can sign that CSR and it can become the device certificate for vManager.
अब देखो यहाँ वी मैनेजर पे डिवाइस सर्टिफिकेट अभी क्या दिखा रहा है, नॉट इंस्टॉल्ड, right? So we need to install it. So for that we need to generate the CSR from the GUI. So you will go to your vManage GUI and then configuration, and after that you will go to certificates tab. Here it is showing the certificate for WAN edge list, but कोई WAN edge router अभी added नहीं है. Then we have controllers. In controllers you can see we have vManage, but certificate is not installed. So just click on these three dots and click on generate CSR. Now CSR is generated. Copy the CSR text. If you are using Microsoft CA, then you will download the CSR file from this download button. Otherwise, for now, just copy the text and go to iOS CA. And here you will sign this CSR. You will run a command crypto PKI server iOS CA request PKCS10 terminal. और यहाँ पे अपनी CSR को पेस्ट कर दो. ये सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट है. अब डबल एंटर करो तो ये CA क्या करेगा, उस CSR को साइन कर देगा और ये बन गया आपका डिवाइस सर्टिफिकेट. अब इस डिवाइस सर्टिफिकेट के टेक्स्ट को iOS CA से हम लोग कॉपी कर लेंगे. अब जैसे आप रियल टाइम में करोगे, मान के चलो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर CA यूज कर रहे हो, राइट? तो आप CSR फाइल माइक्रोसॉफ्ट CA सर्वर पे अपलोड करोगे, CA सर्वर उसको साइन कर देगा और फिर आप वहां से एक डिवाइस सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लोगे. जैसे ये डिवाइस सर्टिफिकेट का टेक्स्ट आ गया, उसी तरह से एक डिवाइस सर्टिफिकेट की फाइल मिल जाएगी. और फिर से आप vManage पे आ जाओगे, vManage की GUI पे. तो यहाँ कंट्रोलर सर्टिफिकेट एंड देन दिस vManage tab. Here you will select the vManage and you will click on install certificate. और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो सर्टिफिकेट टेक्स्ट को. ओके, एंड क्लिक ऑन इंस्टॉल. अब देखो ये vManage का डिवाइस सर्टिफिकेट यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा. It is successful. You can see. ओके, तो अब अगर आप फिर से कॉन्फ़िगरेशन टैब और फिर सर्टिफिकेट में जाओगे और कंट्रोलर्स में, तो यहाँ vManage दिखाएगा. और अब क्या दिखा रहा है, यहाँ पे सर्टिफिकेट सीरियल नंबर शो कर रहा है 02. इट मीन सर्टिफिकेट इज इंस्टॉल्ड. हियर इट इज आल्सो शोइंग एक्सपायरेशन टाइम. 2 साल के लिए बनाया था, 2025 तक वैलिड है ना? तो vManager पे सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो गया. नाउ वी नीड टू कॉन्फ़िगर vBond एंड vSmart. So let's go to vBond, log into vBond CLI. ओके, अब देखो जो vBond कंट्रोलर होता है उसके लिए हम लोग vEdge क्लाउड राउटर की इमेज यूज कर लेते हैं. ओके, बट ये हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे एज अ vBond. So you will go to global configuration mode. First of all, define system configuration. Host name, you can give vBond. Guys, give me 1 minute. Someone is calling me. अच्छा अच्छा ठीक है. Okay. So here host name vBond, then site ID, it is 100, system IP 10.100.0.11, and then organization name SD-WAN lab 01 dash, and then vBond address 223.11.11. So this local device is vBond itself, right? So here you need to use local keyword. Exit. Okay. After that we have VPN 0. So let's configure VPN 0. Interface, it is gig 0/0. सर एक चीज जैसे ये vBond का आपने एड्रेस दिया, इसके आगे लोकल लिखा है. हाँ, ये तो चलो हम लोकली यूज कर रहे हैं अभी डिवाइस में. अगर मान लो कोई जैसे क्लाउड पे होता तो वहां का एड्रेस देना पड़ेगा, हमें लोकल की जगह पे कोई लोकेशन नेम देना नहीं, ये देखो vBond कंट्रोलर है ना, ये खुद ही vBond कंट्रोलर है जो हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं. जी जी, राइट. तो कहीं भी vBond कंट्रोलर हो, जब आप उस पे vBond का एड्रेस डिफाइन करोगे तो वो लोकल डिवाइस ही होगा. ठीक है सर, ठीक है ना, इसीलिए इसको लोकल यूज किया है. जब ठीक, देखो मैंने वी मैनेजर पे डिफाइन किया था जी जी, vBond का एड्रेस, तो वहां पे लोकल यूज नहीं किया था, है ना. वहां पे मैंने सिर्फ vBond का एड्रेस डायरेक्टली डिफाइन किया था. देखो यहाँ मिल जाएगा वैसे तो. हम लोग लाइव सिनेरियो में भी हमें लोकल यूज करना है. हाँ, अगर आप vBond पे कॉन्फ़िगर कर रहे हो. ठीक है सर. अगर vManage पे कर रहे हो या vSmart पे बता रहे हो, vEdge पे बता रहे हो, तो लोकल नहीं लगाना, है ना. ठीक, वहां अगर से आईपी देना बस. हाँ, वहां पे सिर्फ IP. अगर आप vBond पे कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो ये लोकल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा. ठीक है सर. तो इंटरफेस gig 0/0 and then IP address 223.11.11. यही तो अपने vBond का IP /. No set off. And it is tunnel interface, allow service all. And after this, I will configure a default route towards DC switch. Okay, here we cannot give these 4 zeros /0. Now it is correct. So commit and switch. So you can verify the connectivity with the gateway with the DC switch, or you can ping vManage, you can ping iOS CA, because vBond is connected in the network, right? So it is able to reach all the controllers and certificate authority. So we need to download and install the certificates. तो यहाँ भी देखो root certificate by default installed है, तो इसको remove कर दो, right?
वैसे 20.x है, तो यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ. So certificate root CA include issuer. ओके, तो अब देखो यहाँ आपको सर्टिफिकेट, रूट सर्टिफिकेट सिर्फ अनइंस्टॉल करना है, ये वाला. दूसरा इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, वो भी मैनेज ऑटोमेटिकली पुश कर देगा. रिक्वेस्ट रूट साइड चेन अनइंस्टॉल, ये अनइंस्टॉल कर दो बस. जो पहले से बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल आता है उसको मैंने अनइंस्टॉल कर दिया. एंड नाउ लेट्स ऐड दिस वी बॉन्ड इन वी मैनेज GUI. राइट, so go to configuration, then devices, then controllers. Here you will click on add controller. देखो vmanage certificate status क्या दिखा रहा है? Installed. So vmanage is working fine. Now let's add new controller vbond. Vbond IP address 223.1.1.11, username admin, and password is also admin. Generate CSR. So as soon as vbond will be added in vmanage will push the root certificate. Okay. देखो इसके पास आ गया रूट सर्टिफिकेट. देखो मैंने जब ऐड नहीं किया था पहले, तो यहाँ पे कोई रूट सर्टिफिकेट नहीं है अपना वाला, है ना. जो iOS CA का होना चाहिए वो नहीं था. लेकिन जैसे ही मैंने इसको vmanage में ऐड कर दिया, तो vmanage ने क्या किया, अपना रूट सर्टिफिकेट यहाँ पे पुश कर दिया. राइट, so now we just need to install the device certificate for vbond. ओके, देखो यहाँ नॉट इंस्टॉल दिखा रहा है. तो अब आप सर्टिफिकेट स्टेप पे चले जाओ फिर से. अब vbond के लिए आप CSR जनरेट करोगे, कंट्रोलर स्टेप पे आ जाओ. ये vbond रहा. राइट, क्लिक ऑन 3 डॉट्स, जनरेट CSR. So I have copied the CSR file. Now let's go to iOS CA. Here you will run crypto PKI server iOS CA request PKCS10 terminal. This is your certificate request. Then you will hit double enter. You will hit enter 2 times. The certificate is generated. Copy the certificate. Go to vmanage GUI. Here configuration, then certificate, and then controller. Here you will find vbond. Select vbond and click on install certificate. Paste the text of certificate here. Okay. And click on install. तो ये इंस्टॉल हो जाएगा. ठीक है, तो अब आपको रूट सर्टिफिकेट मैनुअली इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा vbond और vsmart पे. ये ऑटोमेटिकली कहां से मिल जाएगा? vmanage से. ओके, it is successful. vbond is also added in SD-WAN fabric. Right, you can go to configuration and then devices. Go to controllers. Here you can see this is vbond. Certificate is installed. Right, now let's add vsmart controller. Before that, let's configure vsmart. System configuration and VPN configuration. We are able to log in. This is our vsmart. So let's go to global configuration mode. Here, let's configure system. So host name, it will be vsmart. Then site ID, it is 100. System IP, it will be 10.100.0.12. Organization name SD-WAN lab 01. It must match on all the devices. vbond address 223.1.1.11. After that, VPN 0. Interface ETH 0. No shutdown means Ethernet 0. 223.1.1.12/24. Tunnel interface, allow service all. Then configure a default route in VPN 0 towards DC switch. And commit and quit. Right? You have to give this configuration so that your vSmart should be able to connect with the network. It should be able to reach iOS CA. Right? It should be able to reach vmanage. Okay. So it is able to reach, it should be able to reach vbond also. It is able to reach, right? Now we can install the certificates. We can download and install the certificates. Why it is not cancelled? Yeah. So for now, on this vSmart, a root certificate is installed already. So you can uninstall, request root side chain, install. And now you don't need to install the root certificate again. It will be pushed by vmanage, right? So just go to vmanage GUI and add vSmart controller here. Click on add controller, go to vSmart and provide the management IP address of vSmart 223.1.1.12, username admin, password admin. DTLS is being used. You can also change it to TLS and generate CSR. CSR will also be generated. Click on OK. Click on OK. So here you can see vSmart certificate. The device certificate is not installed. And on vSmart, the root certificate is installed again. You can check. Oh shit, I installed it by mistake.
So let's add this vSmart again. Okay, by mistake I have installed. So here I will invalidate this. And let's add vSmart controller again. It is 12.223.1.12. Then username admin, password admin. ओके, अब आप चेक करो, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा यहाँ पे। देखो अभी ये नॉट इंस्टॉल दिखा रहा था, अब देखो इंस्टॉल दिखाने लगा, राइट। तो वी मैनेज ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट पुश कर देता है जैसे ही आप किसी कंट्रोलर को उसमें ऐड करोगे, आपको मैनुअली नहीं कराना पड़ेगा। बट यू हैव टू इंस्टॉल डिवाइस सर्टिफिकेट। रूट सर्टिफिकेट विल बी पुश्ड बाय वी मैनेज, बट यू हैव टू इंस्टॉल डिवाइस सर्टिफिकेट। So for that you will generate CSR from here, right? So you will go to configuration and certificates, then controller. So here it is showing vSmart. Now it is showing CSR generated. So आप directly CSR को open कर लो, view CSR पहले से generated है ना, तो इसको copy कर लो and go to iOS CA, crypto PKI server, iOS CA request PKCS10 terminal और यहाँ इसको paste कर दो and hit double enter. तो देखो इसने क्या किया, सर्टिफिकेट जनरेट करके दे दिया, इसको कॉपी कर लो। ओके, लाइक दिस and go to your controller GUI, we manage GUI, select vSmart controller like this and click on install and paste the certificate here, click on install. तो अब ये vSmart का सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों कंट्रोलर्स सक्सेसफुली ऐड हो गए, राइट। It is also added. Now, if you want to verify, you can go to configuration and devices, then controllers. Here it will show you all the controllers are successfully deployed and their certificates are also installed. Now, if you want that these controllers should be able to create control connections between them, should be able to create DTLS tunnel between them, then you will go to configuration and then certificates, then controller. And here you will click on send to vBond. अब क्या करेगा, ये सारे कंट्रोलर्स को vBond के पास भेज देगा, vBond ऑथेंटिकेट करेगा और DTLS टनल्स क्रिएट हो जाएंगी, है ना। ओके, so you can see now it is successful. अब देखो तीनों कंट्रोलर्स ने SD-WAN ओवरले नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया है। ओके, नाउ यू कैन वेरीफाई द कंट्रोल कनेक्शंस ऑन देम। यू कैन गो टू वी मैनेजर। सबसे पहले तो आप कंट्रोल कनेक्शंस वेरीफाई करो, शो कंट्रोल कनेक्शंस। Here you can see this V manager is able to create 4 control connections with vBond because it has 4 cores, right? And it is creating a single DTLS control connection with vSmart also. I told you that vSmart और vManage के बीच में सिर्फ एक ही कंट्रोल कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, या तो आप उसको DTLS से एस्टैब्लिश कर सकते हो या TLS से। तो यहाँ हमने DTLS से कर रखा है, राइट। Other than this, on vManage, if you have 4 cores, then it will create 4 control connections with vBond. तो यहाँ देखो create हो गए, right? You can go to vSmart also, show control connections. These control connections are showing DTLS tunnel. Okay, ये control connection क्या है, DTLS tunnel है। देखो सब में प्रोटोकॉल क्या लिखा है, DTLS। तो vSmart के पास 2 कोर है, vSmart has 2 CPU cores, so it has created 2 control connections with vBond and 1 control connection with vManage. Okay, vSmart और vManage के बीच में हमेशा एक ही कंट्रोल कनेक्शन बनेगा, ठीक है। अदर देन दिस यू कैन चेक vBond। अब देखो vBond क्या है, ऑर्केस्ट्रेटर है। तो यहाँ पे अगर कमांड चलाओगे शो कंट्रोल कनेक्शन कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है। vBond पे शो कंट्रोल कनेक्शन में कुछ भी शो नहीं करेगा। तो यू नीड टू रन द कमांड शो ऑर्केस्ट्रेटर कनेक्शन, right? In show orchestrator connections, it will show you that vBond is able to create 2 control connections, means 2 DTLS tunnels with vSmart and 4 control connections with vManage, right? Are you able to understand? समझ में आ रहा है? यस सर। अब यहाँ vManage के मॉनिटर टैब में चले जाओ, फिर नेटवर्क टैब में जियोग्राफी देख लो। चलो जियोग्राफी। अब देखो जियोग्राफी में क्या होता है कि अभी हमने लोकेशन डिफाइन नहीं की है, राइट? जीपीएस लोकेशन। अब जब आप जीपीएस लोकेशन डिफाइन कर दोगे तो वर्ल्ड मैप पे आप अपनी डिवाइसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी डिवाइसेस किस फिजिकल लोकेशन पे कनेक्टेड है, ठीक है। बट अभी के लिए आप नहीं कर सकते बिकॉज जीपीएस लोकेशंस आर नॉट डिफाइंड। देखो ये सारे कंट्रोलर्स को यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन आगे हम लोग जीपीएस लोकेशंस को चेंज करेंगे। गो टू नेटवर्क। Here in the network tab, it will show you all the registered devices, all the devices which are reachable in SD-WAN overlay network. अगर नहीं reachable होगी तो unreachable दिखा देगा, ठीक है। तो देखो ये vBond
यहाँ पे रजिस्टर्ड है, वी मैनेज है, वी स्मार्ट है, वी मैनेज पे क्लिक करो, यहाँ से आप इसके कनेक्शंस, कंट्रोल कनेक्शंस को वेरीफाई कर सकते हो। तो देखो वी मैनेज के कंट्रोल कनेक्शंस वी स्मार्ट और वी बॉन्ड के साथ क्रिएटेड है, इट इज शोइंग राइट। ओके, other than this here we have many other options, we will see them। यहाँ से आपको टी लॉग, लेकिन ये सब वैन एज राउटर पे एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ ये जो कंट्रोल कनेक्शंस होते हैं वही शो किए थे। देखो ये इंटरफेस की टैब है, यहाँ से आपको जो भी मैनेज के इंटरफेस है उनकी कॉन्फ़िगरेशन दिखा देगा, ठीक है। और ये कंट्रोल कनेक्शन की टैब है, कंट्रोल कनेक्शन, यहाँ पे आपको ये कंट्रोल कनेक्शन शो कर देगा। सिस्टम स्टेटस मीन सीपीयू, मेमोरी, रिबूट, क्रैश, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दे देगा वो, बट अभी के लिए कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने डिवाइस को मॉनिटर कर सकते हो। जैसे अगर आप वी मैनेज की जगह पे वी स्मार्ट को मॉनिटर करना चाहते हो तो फिर से नेटवर्क पे चले जाओ, वी स्मार्ट पे क्लिक कर दो, राइट। ये आपको वी स्मार्ट की इन्फॉर्मेशन दे देगा, वी मैनेज के साथ कंट्रोल कनेक्शन है, ठीक है। और आप इंटरफेस इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे ये इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड है। Now, if you want to change the device, you can change the device from the select device option. डायरेक्ट यहाँ से वी बॉन्ड पे चले जाओ,